Before we move ahead into today's event, let us take a moment to understand what Disha Bharat is and the vision behind this initiative. Disha Bharat is a not-for-profit organization that has been shaping young minds since 2005 through value-based personality development programs centered on know yourself, know your country, and know your culture. It empowers students to become responsible citizens and nation builders. My Bharat National Youth Campaign is nationwide initiative. Disha Bharat dedicated to awakening patriotism, nurturing responsible citizenship, and inspiring young Indians to become active contributors to the nation's future. One event under My Bharat campaign is the student activity, in which students across India join online and share their knowledge, inspiring words with us. Today's session is another step in that beautiful journey of learning and inspiration. It's now my honor to invite our first speaker. Today's first session is on inspiring life of Birsa Munda, a fearless tribal freedom fighter, visionary leader, and symbol of courage who dedicated his life to protecting the rights, dignity, and identity of his people. To enlighten us on this remarkable personality, I warmly welcome Vanshika. Vanshika is an electrical and electronics engineering student at G. Narayanamma Institute of Technology and Science. Since her school days, she has taken part in donation drives for visually impaired people and orphanages. Her dedication to serving others reflects the true spirit of kindness and compassion. Thank you for joining us today, Vanshika. The virtual stage is all yours. Thank you, Nidhi. Namaste, everyone. First, a big thank you to Disha Bharat for giving me the opportunity to address you all today and share the story of an extraordinary freedom fighter, Bhagwan Birsa Munda. When most of us think about the India's battle for freedom, our minds almost automatically picture grand political rallies in major cities, the historic speeches delivered in magnificent assemblies, and the iconic leaders whose names fill almost every chapter of our history textbook. But what if I told you that some of the most extraordinary battles of our nation's soul weren't fought in the metropolitan centers at all? They were fought inside silent forests, mist-covered valleys, and rugged hills by people whose weapons were simple wooden bows, but whose resolve could shake an empire. Picture this for a moment. A young youth, barely 25 years old, standing in the dense jungle of the central India. He has no formal army, no modern rifles, no inherited wealth, and no political title. Yet, when he speaks, thousands of villagers gather to listen. When he calls for justice, a global superpower takes notice. And by the time he leaves this world at an unbelievably young age of 25, his legacy is so immense that an entire community renames him Dharti Abha, meaning Father of the Earth. That formidable, unsung hero of our soil was none other than Bhagwan Birsa Munda. Today, as we come here in the 15-day celebration of our national independence, I invite you to step away from the conventional history books and explore three compelling questions with me. Who were these fearless tribal warriors who fought for freedom long before the rest of the world paid attention to it? How did a humble village youth transform a localized struggle into a fury region-wide revolution against the mighty British Empire? And why does Birsa Munda's message of self-reliance, cultural dignity, and land rights matter just as much as to us today in the 21st century? Let me begin with the roots of a reformer. Birsa Munda was born on November 15, 1875, in a small, remote village named Ulikhatu, located in the present-day Kunti district, Jharkhand. Back then, it was just the forgotten corner of the Bengal presidency. Birsa Munda came from a simple, hard-working farming family belonging to the Munda tribe. He was not rich, he had no privileges, no political influence, and no standing army behind him. He grew up as ordinary as any tribal child would.
wandering through the lush hills, thick forests, and the open fields of the Chota Nagpur plateau. Yet, growing up in Chota Nagpur was far from peaceful. As Birsa Munda entered in his teenage years, he witnessed firsthand the systematic disruption of his people's way of life. Outsiders in the tribal communities called Bhikkhus were steadily encroaching upon their ancestral land. The greedy moneylenders trapped innocent, illiterate villagers into brutal debt cycle that passed from one generation to the next. The colonial British administration imposed harsh land revenue policies and forced tribal families into unpaid manual labor. It is known as BHarat. Just imagine working endlessly under the scorching sun for someone else and without receiving a single coin, simply because you lack the legal power to say no. But inside Birsa Munda, a quiet, powerful transformation began to take shape. What makes Birsa Munda truly unique among the revolutionaries is that he did not begin with a weapon or violent revolt alone. He realized that a divided, demoralized, and socially weakened community could never stand against the mighty British Empire. Therefore, Birsa Munda first became a visionary social reformer. He launched a powerful spiritual movement known as BHarat. He traveled endlessly from village to village, walking miles across rough terrains, directly speaking to the people. He urged them to abandon harmful suppression, stop the internal conflict, reject addiction, and regain their self-respect. He taught them to worship one God, Singh Bunga, and to take the pride of the tribal heritage. He reminded them that the true freedom begins with one thing, with moral strength, cleanliness, and unity. Slowly, the tribal communities recognized that this young man was giving them something they had lost for decades. Out of deep love and spiritual reverence, they began referring Birsa Munda as Dharti Abha, meaning Father of the Earth. Think about the immense reverence in that title. Birsa Munda was barely in his early 20s, yet an entire population looked up to him as their guardian and spiritual guide. That is not a title gained by authority. It is a title earned through selfless dedication and absolute trust. However, Birsa Munda was also a realist. He understood that the modern reform alone could not stop the physical confiscation of the land or the brutality of the colonial officials. The oppression continued every single day. By late 1899, Birsa Munda realized that the time for peaceful protest had passed. He decided to take a step that sent shockwaves to the British administration. He called for an armed collective uprising. This grand political resistance came to be known as Ulgulan, which translates to the Great Revolt or the Great Rebellion. Birsa Munda did not have access to modern rifles or formal military training. His army consisted of ordinary villagers, farmers, mothers, youth, and the elders. They gathered in silent forests, which were secret forests, armed only with their traditional hunting tools like wooden bows, poisoned arrows, and axes. Across the valleys and the hills of Chota Nagpur, a revolutionary slogan echoed with fierce intensity, a slogan that sends chills through our veins today. Abua Dihum Abua Raj, our land, our rule. Pause for a moment and picture the scene in your mind. 1,000 tribal men and women standing on the mist-covered hills of the Jharkhand, holding simple wooden bows, looking directly into the eyes of the greatest colonial empire on the earth, and boldly declaring that their land solely belongs to them. That was not just a political battle.
It was a fierce expression of human dignity, self-sovereignty, and indigenous rights. To that, the British administration responded with ruthless, unyielding violence. Police force were reinforced, troops were deployed, and a heavy firepower was brought into the hills. The climax of this tragedy occurred at the Dhambari Hills in the early 1900s. Thousands of tribal villagers, including women and children, had gathered at the Dhambari Hills to listen to their leader Birsa Munda. British forces surrounded the hills and opened fire indiscriminately upon the crowded slopes. On that day, hundreds of innocent tribal fighters had lost their lives defending their leaders, their land with nothing more than wooden arrows against retreating rifles. The massacre was so horrifying, so bloody, that the local villagers renamed Bhambari Hills as Sob Guru, the Mound of the Dead. Yet, even after such horrific tragedy, the spirit of Ursuline did not break. That demonstrates how deeply Birsa Munda had lit the flame of freedom in their heart, a flame that no army could extinguish. In March 1900, after a relentless manhunt, the colonial forces caught up with Birsa Munda. He was betrayed while sleeping in the Jamco forest with his remaining fighters. They bounded him with chains, dragged him through streets to Sanchi jail, and on June 9, 1900, inside a dark prison cell, Birsa Munda took his last breath. The colonial authorities declared cholera as the official cause of death. But to this day, historians, scholars, and the people of Jharkhand know that a 25-year-old was silenced by harsh conditions and brutality of imperial captivity. When Birsa Munda died, he was only 25 years old. 25 years. Let that age sink in. At 25 years, young people are just beginning to figure out their path in life. But Birsa Munda had already united an entire region, built a social movement, and fought an empire, and gave his life for his motherland. And his sacrifice was not in vain. The colonial government soon realized that the tribal anger could not be suppressed purely through military forces. To prevent another Ulgulan, the British government was forced to acknowledge the validity of tribal land grievances. In 1908, after 8 years of Birsa Munda's death, the British administration enacted the historic Chota Nagpur Chowdhury Act. This landmark legislation strictly prohibited the transfer of tribal land to non-tribal ownership, legally protecting the ancestral tribal land rights. Today, more than a century later, thousands of tribal families in Jharkhand and the surrounding regions still retain ownership of their ancestral land just because of the blood shed by Birsa Munda and his brave warriors. This is his lasting victory, a law written in response to his sacrifice that still protects his people today. Today, our nation honors Birsa Munda with the highest respect. Every year on November 15th, his birth anniversary, India celebrates Janjantiya Gaurav Divas, that is the Tribal Pride Day, to celebrate the immense contribution of the tribal freedom fighters. A grand statue of Birsa Munda stands in the House of our India, looking over the lawgivers in our modern republic. Furthermore, the very field in Ranchi where he passed away has been transformed into a majestic national museum, ensuring that his sacrifice remains etched in our collective memory. As we participate in this national address today, celebrating 79 years of Indian independence, let us reflect on crucial lessons. India's freedom was not built solely by a few famous fighters in major political capitals.
It was forged in silent forests of central India, the mountains of northeast, the rural villages of south, and the coastal towns of the east. It was built by ordinary people who chose extraordinary courage over submission. Bhagwan Birsa Munda lived only for 25 years, but in those 25 years, he proved that the leadership is not defined by age, privilege, or weapons. It is defined by moral courage, deep love for one's people, and an unyielding commitment to justice. Let us honor his memory today, not just with words, but by preserving the values he fought for: dignity for every community, protection of our national heritage, and unwavering pride in our motherland. Salute to Bhagwan Birsa Munda. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Vanshika, for such an inspiring session. Your words reminded us that true leadership is built on courage, sacrifice, and self service. On behalf of Disha Bharat, thank you for sharing your valuable insights. Moving ahead, our next session explores a timeless concept from our ancient wisdom that remains highly relevant even today. The topic is Pancha Mahayajnas, an ancient blueprint for responsible citizenships. Pancha teaches us that every individual has responsibilities, not only towards ourselves, but also towards society, nature, knowledge, our ancestors, and all living beings. To guide us through this enriching topic, I warmly invite Ms. Singh Ashika. Ashika is pursuing an integrated MSc in Vedantic Science and Life Management at the School of Language, an academic path devoted to uncovering the timeless wisdom of our scriptures and translating it into everyday living. There could not be a more fitting voice to walk us through the depth and relevance of the Panchamahayagnas. Welcome to today's session. Ashika, the stage is yours. Thanks a lot of Nidhi. Today I want to talk about Panch Mahayagna. Friends, we understand firstly what is Panch Mahayagna. Panch Mahayagna is not only the person's humanity responsibility, but it is the basic things to understand what I do responsibility for our nature, for our society, for our family, and so on. फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल के साथ हम समझें तो पंच महायज्ञ से हमें पता चलता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज में जो हम काम करते हैं, अलग अलग टाइप से कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें हम पंच महायज्ञ का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज अ बिल्डर मेक अ बिल्डिंग्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स शुड बी क्रिएट। तो सबसे उसका इम्पोर्टेंट थिंग होगा उसका बेस। सेम हमें पंच महायज्ञ से बात की गई है कि जो पंच महायज्ञ है वो हमारे डेली रूटीन का एक बेस बनता है, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे 5 पंच महायज्ञ है जिसे हम डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वी कैन चेंज अवर लाइफ फॉर गुड हैबिट्स। तो नाउ अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है हमारा ब्रह्म यज्ञ। फ्रेंड्स, ब्रह्म यज्ञ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम लोग कृतज्ञता भाव से अपने जो ब्रह्मा है, जो उसने हमें ज्ञान दिया है, उनको हम थैंक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो ब्रह्म यज्ञ जो है वो ज्ञान का और आत्मविश्वास का स्रोत है। जैसे कि अब कोई बड़ा संत है, उन्होंने अपने ज्ञान से हमें और भी ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया है। जो उनके पास ज्ञान है वो हमें दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ज्ञान और हमारा जो है ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अब ब्रह्म यज्ञ सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें उसे समझना चाहिए और हर चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और जो ये समझता है, इट इज द बेस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड यज्ञ है वो है देव यज्ञ। देव यज्ञ से हमें पता चलता है कि हम जो हमारे 5 ऑर्गन्स है, वो चीजें हम देव यज्ञ से प्राप्त की गई है।
और देव यज्ञ सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए, बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें। लाइक अर्थ, वाटर, एयर, ये सारी चीजें जो है वो हमें नेचर गिफ्ट की गई है। तो हमारी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको इजीली और अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखें, उसका ज्यादा से ज्यादा वेस्ट यूज ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा देव यज्ञ, और वो सारी चीजें हम जो हमें मिली है नेचर के थ्रू या बाय गॉड के थ्रू, तो हम उन्हें थैंक्स करें। ये था हमारा देव यज्ञ। फ्रेंड्स, हम थर्ड यज्ञ की बात करें तो थर्ड यज्ञ जो है अपना, वो है हमारा पृथ्वी यज्ञ। अब पृथ्वी यज्ञ क्या है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पृथ्वी यज्ञ ये है कि जो हम हमारे माता पिता है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उन्होंने जो हमें सम्मान दिया है, हमारी जो आने वाली हर चीज को एक्सेप्टेड करके रखा है, उसे हम आने वाले हर पीढ़ियों में यूज करें और उसको अच्छे संस्कारों से अर्पित करें। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पृथ्वी यज्ञ में आती है। फ्रेंड्स, पृथ्वी यज्ञ सिर्फ हमारे ये नहीं सिखाता कि हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, बल्कि उनकी हर चीजों को, हम उनकी हर एक चीज को हर एक तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करना। जैसे कि अब रामायण की बात करें तो रामायण में जिस तरीके से राम जी ने बिना कुछ कहे माता कैकेयी की बात मान ली थी और वो वन चले गए थे, तो उस टाइप का एक पृथ्वी यज्ञ कहला सकता है, जिसमें हम एक रिस्पेक्ट के साथ किसी को थैंक्स करते हैं, या फिर हम अपने जो पेरेंट्स है, गुरु है, उन सब के साथ कुछ सीखते हैं और उनको थैंक्स बोले। तो इस टाइप का जो यज्ञ है वो हमारा पृथ्वी यज्ञ है। हमारा जो फोर्थ यज्ञ है मनुष्य यज्ञ, जिसे हम अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य यज्ञ सिर्फ हमारे लिए नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो है एक बेसिक चीजें हैं, और इस यज्ञ में हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसमें हम नेचर के थ्रू, हमारी जो सोसाइटी के थ्रू जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एक्सेप्ट करके उसका इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हर जगह बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से जो हम अपनी डोनेशन के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, सर्विस के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, जैसे फ्री एजुकेशन कैंपस कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके लिए करें। और फ्रेंड्स, यही अगर आप एक्सेप्ट करके मनुष्य यज्ञ में करते हो तो इट इज द वे टू नो अंडरस्टैंड मनुष्य यज्ञ, और मनुष्य यज्ञ हमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है। फ्रेंड्स, फिफ्थ यज्ञ की बात करें तो फिफ्थ यज्ञ में हमें ये बताया गया है कि भूत यज्ञ है। अब भूत यज्ञ से हमें पता चलता है कि उसमें भूत की बात की गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भूत यज्ञ एक बहुत ही, बोल सकते हैं, नेचर से कनेक्टेड है, हमारे एनिमल से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, जो भी जीव जंतु होते हैं अक्सर क्या करते हैं हम लोग, उन्हें बिना सोचे समझे उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम उन लोग की सांस छीन सके, और हम जो है खुद एक मनुष्य है, अगर हम नहीं समझेंगे तो उनमें तो अंडरस्टैंडेबिलिटी है भी नहीं कि वो समझ पाए। तो सबसे पहले हमें खुद मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनका प्रिजर्वेशन कर सके और उनसे अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज के साथ एक क्रिएटिविटी आइडिया इन्वायरमेंट दे सके। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं जो आती हैं हमारे भूत यज्ञ में। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हमारा पंच यज्ञ है उसमें जो भूत यज्ञ की बात है उसके एग्जांपल ऐसे बन सकते हैं कि समझिए कि अगर कोई एक फैमिली मेंबर्स है, उसमें एक वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, अब वेजिटेरियंस है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस है उनकी आदत है कि हर टाइम वो, हर समय और हर डे वो लोग, आप समझ गए होंगे, कि एनिमल्स को लेके आते हैं और खाते हैं। तो इस टाइप से जो प्रिजर्वेशन होता है तो वो एक गलत है, वो भूत यज्ञ में नहीं आता। और उसी जगह जो दूसरी तरफ है हमारी वेजिटेरियन फैमिली, उन्होंने भूत यज्ञ को इम्पोर्टेंस दिया और इसी तरीके से वो यज्ञ को समझ पाए। तो फ्रेंड्स, ये सारे यज्ञ अगर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका एक्सपेक्टेशन इम्पोर्टेंस समझते हैं,
So it is well to understand our responsibility regarding our nature, God, and someone else, because it is not only the responsibility for our, it is the basic things to understand for all the human beings and all the person who get this responsibility accepted. तो फ्रेंड्स, ये जो पांचों यज्ञ है वो एक बेस है अपने डेली लाइफ के रूटीन को चेंज करने का। अगर आप भी एक बेटर इंसान, अगर बेटर सिटीजनशिप बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके कुछ न्यू चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जो पंच महायज्ञ है वो हमें जीवन सूत्र की तरह यूज करना चाहिए। क्योंकि जो हजारों साल पहले, thousands of years, our sage give this opportunity and understandability for this Panch Mahayagna. It is the base for all the human beings to understand easily and use daily life routines. अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पंच महायज्ञ जो है वो हमारे डेली लाइफ में चेंज होता ही है, क्योंकि जो हमारे पहले महर्षि थे, जो हमारे पहले जैसे राम जी की बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने ये पांचों यज्ञ से अपना अपना कल्याण किया, दूसरों का कल्याण किया। तो इस तरीके से जो पंच महायज्ञ है वो उनके जीवन से रिलेटेड होकर उन्हें एक महान पुरुष बना दिया। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि हमें डेली लाइफ में इनको नोटिस करना चाहिए, बट हाँ, अगर हो सके तो इन सारी चीजों को समझ के हमें पंच महायज्ञ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो पंच महायज्ञ को या फिर अपनी संस्कृति को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो सोचते हैं ठीक है जो है वो चल रहा है, लेकिन अगर इन द बेसिक सेंस हम समझ सकते हैं कि पंच महायज्ञ जो है वो सिर्फ हमारे जीवन लाइफ में रोल नहीं करता है, हमें एक ड्यूटीज सिखाती है कि हाउ टू मेक अवर बेस्ट सिटीजनशिप रिगार्डिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो पंच महायज्ञ है उसे हम 5 सेक्रीफाइस स्टूडियो भी कह सकते हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसे चेंज कर देता है। तो इस तरीके से जो पंच महायज्ञ है, इन कंक्लूजन हमें नेचर से रिलेटेड, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड करके हमें एक बेस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता है। और इट इज टू मेक बेटर कॉन्फिडेंस पर्सन फॉर योर डेली एक्टिविटी रूटीन्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी पंच महायज्ञ में। I hope you understand very well, but I give you summary for according this पंच महायज्ञ। कि पंच महायज्ञ कंक्लूजन में अगर बात करें तो सिंपली हमें नेचर से रिलेटेड, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, हमारे नेशन से रिलेटेड, हमारे जीव जंतु जो है एनिमल्स से रिलेटेड, उन सारी चीजों से रिलेटेड हमें पंच महायज्ञ एक एक्टिविटीज बताती है जिसमें हम अलग अलग तरीकों से सारी चीजें कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। और एक बेस्ट सिटीजनशिप और बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्सन का एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इन पांचों पंच महायज्ञों को एक्सेप्ट करके अपने डेली लाइफ और दूसरों का वेलफेयर सोसाइटी बनाए, इन्वायरमेंट दे जिन्हें इनकी बहुत ही जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें पंच महायज्ञ से सीखने को मिलती है। और जितना मेरे पास आइडिया था आई हैव शेयर यू, बट मैंने जितना समझा उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। और पंच महायज्ञ को समझने के लिए हमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना है, उसे समझने के लिए हम जो डेली लाइफ में रूटीन यूज़ करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हम खुद चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मेरा फर्स्ट टाइम था स्कूल कॉलेज का, तो हमारे कॉलेज में एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें हमें प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाने थे। तो हमने गार्डन में प्लांट्स को लगाए और हमने एक संकल्प लिया था कि हमें जो भी प्लांट्स है और जब तक हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 इयर्स का, उसमें हम इस प्लांट को बड़ा करना है, ये हमारा टारगेट था। और अभी भी हम लोग कर रहे हैं प्रिजर्वेशन। तो कहीं ना कहीं ये देव यज्ञ में आ ही रहा है कि हम गॉड को थैंक्स करते हैं, हम ट्री प्लांटेशन बनाते हैं, तो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हैं कि हमें ट्री को प्रिजर्व करना है, ट्री को वाटरिंग करना है, सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने नेशन को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें करें, तो वी चेंज अवर डेली लाइफ रूटीन एंड वी मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन फॉर अवर लाइफ।
तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन सच में बनना चाहते हैं या फिर है, क्योंकि अक्सर ये सारी चीजें लोग समझ भी सकते हैं, और जो समझता है वो एक बेस्ट पर्सन बन सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो जो ब्लूप्रिंट है, ये पंच महायज्ञ में जो ब्लूप्रिंट कहा गया है वो हमारे लिए ही कहा गया है कि हमारे जो पहले के महात्मा संत थे और आज हम लोग जो हैं वो बहुत ही डिफरेंस में चलते हैं, क्योंकि पहले के जो महात्मा संत थे वो ये पांचों यज्ञों को ध्यान में रखती हर एक्टिविटीज करते थे, अपना वर्क करते थे। लेकिन आज जो सेशन में मैं आपको बता रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी बात की गई है या फिर मेरी खुद की बात की गई है कि हमें खुद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। और पंच महायज्ञ एक ऐसा सूत्र है जिसे हम यूज करने के बाद बहुत सारी एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं, अपने खुद की एक्टिविटीज को भी चेंज कर सकते हैं, अपने नेचर्स के अकॉर्डिंग अपने सारी चीजें जो है वो अंदर स्टेबिलिटी समझ सकते हैं। तो ये हमारा पंच यज्ञ की जो मेरी थॉट थी मैंने आपको बताई, और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और थैंक्स टू डीसा भारती टीम गिव मी अपॉर्चुनिटी। एंड ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। Thanks to Disha Bharti, and have you continue on your process. Thank you so much. Thank you so much, Ashika, for such a wonderful and insightful presentation on the Pancha Mahayajnas. Your explanation reminded us that every responsible citizenship begins with our everyday actions and values. On behalf of the entire Disha Bharat family, thank you for sharing your valuable thoughts with us. Learning becomes meaningful only when it inspires action, and we hope today's discussion encourage each one of us to become more responsible, compassionate, and committed citizens. Before we end today's program, we would like to invite you all to tomorrow's morning program, that is My Bharat, My Responsibility Student Talk Series. Join us on Monday, 3rd August from 7 a.m. to 7:30 a.m. The topics for the day are life sketch of Jhansi Rani Lakshmi Bai and unity in diversity, India's greatest uniqueness. We hope you all join us live on the Disha Bharat Facebook and YouTube channels. We also have a special program for you tomorrow evening. Join us on Monday, 3rd August at 7 p.m. for the My Bharat National Series, National Level Online Lecture Series. The topic is Role of Revolutionary in the Freedom Movement. Our speaker for the session is Dr. Rakesh Sinha, Professor and former member of the Rajya Sabha. We warmly invite you all to be a part of the both sessions. We look forward to seeing you there. Thank you. Let us conclude today's session with a universal prayer. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you once again for joining us this morning. As we come towards the end of today's inspiring session, we sincerely thank our esteemed speakers, Vanshika and Ashika, and every viewer who joined us live. Until we meet again, keep learning, keep serving, keep inspiring, and keep moving in the right direction. Namaste, Jai Hind. Okay, Jai Hind.